class 6. Vamos a aprender español. We're going to learn some Spanish today. So, what are we going to do? क्या सीखेंगे हम? Let's find out. ¿Qué vamos a hacer hoy? What are we going to do today? We're going to learn los saludos, yani greetings, las despedidas. How do you say bye-bye in Spanish? Diferencia entre tú y usted. What's the difference between you and you? So यानी हिंदी में बोलूं तो तू और आप, इसका क्या फर्क है स्पेनिश में? एंड लास्ट, preguntas de presentación. So आज की वीडियो के एंड तक आप एक बेसिक स्पेनिश कॉन्वर्सेशन आराम से करना सीख जाएंगे. So चलिए बच्चों, सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट आर द एलिमेंट्स फॉर बेसिक कॉन्वर्सेशन. अगर आप पहली बार किसी से मिले, ठीक है, क्या कॉन्वर्सेशन होगी आप लोगों के बीच? सबसे पहले तो यू विल ग्रीट ईच अदर, चाहे बड़े हो चाहे बच्चे, राइट? देन आप उनसे सवाल पूछेंगे कि भाई आपका नाम क्या है, कैसे हैं आप, या आप कहाँ रहते हैं. एंड फाइनली, इससे ज्यादा स्ट्रेच तो होती नहीं है ना फर्स्ट कॉन्वर्सेशंस, सो वी विल जस्ट से गुड बाय. तो आज यही सब चीजें स्पेनिश में कैसे बोली जाती है हम लोग सीखने वाले हैं. Los saludos del día. So vamos a comenzar con los saludos, the greetings or the salutations of the day. So पूरे दिन में आप कभी भी किसी से भी मिले, एक बेसिक वर्ड जो हम बोलते हैं वो क्या होता है? हेलो. In Spanish we said hola. Hola, not hola. बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, H is silent, okay? So hola. And you can use this hola any time of the day. All right? कुछ ऐसी ग्रीटिंग्स होती हैं जो स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे में ही यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल, सूरज निकला है, सुबह सुबह का वक्त है, तो क्या बोलेंगे? बुएनोस दियास. रिपीटिंग अगेन, बुएनोस दियास, व्हिच इज गुड मॉर्निंग. देन दोपहर हुई या शाम, स्पेनिश में उसके लिए एक ही ग्रीटिंग आती है, काम, बुएनास तार्देस. बुएनास tardes. अब ध्यान रखिएगा फर्क, buenos días and buenas tardes. Don't mix the two, okay? The third one बच्चों, buenas noches. Buenas noches, which is good night. तो यहाँ तक हमने सीख लिया कि अगर कोई स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे हो तो buenos buenas वाली ग्रीटिंग यूज होती है, एंड अगर एक कैजुअल ग्रीटिंग देनी हो तो hola. तो टेल मी नाउ, व्हाट विल यू से अगर घड़ी में बज रहे हैं रात के 11:50ish? यू विल से buenas noches, गुड नाइट, राइट? एंड एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ स्पेनिश में जो एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क, जो पंक्चुएशन लगती है जब आप एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, इट्स ऑलवेज टू वे. तो सिर्फ एक सिंगल एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगता, डबल एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. शुरुआत में इट्स इन्वर्टेड, बाद में इट्स नॉर्मल. व्हाई? इट्स अ टू वे कॉन्वर्सेशन, ये सिग्निफाई कर. ओके, नाउ व्हाट इफ घड़ी में हो रहे हैं 12:55 PM, यानी दोपहर का वक्त है. यू विल यूज buenas tardes, राइट? गुड इवनिंग हो या गुड आफ्टरनून, यू यूज द सेम. एंड बज रहे हैं सुबह के 11, सो यू यूज buenos días. buenos días. ओके, चल कुछ और saludos सीखते हैं, कुछ और salutations. Let's begin with hola señor or señorita. So here I am introducing you to a way of referring to people, कि किसी को रेफर करना हो, सर या मिस या मैडम, how do you say that? So for sir or mister we use the word señor. For madam or miss we use señorita. Señor, señorita. Okay? इसी तरह
अगर फॉर्मल है, कोई फॉर्मल सेटअप है, आपके टीचर्स को आपको रेफर करना हो, यू कैन से बुएनोस दियोस सेन्योर, और यू कैन ऑल्सो से बुएनोस दियोस सेन्योरा. ओके, सेन्योरिटा हम यूजुअली यूज करते हैं फॉर अनमैरिड गर्ल्स और यंग गर्ल्स. फॉर विमेन वी स्पेसिफिकली यूज सेन्योरा. They could be married, could not be. It's just a way of giving respect. Okay? Good morning, Mr. or Mrs. Similarly, if you're meeting them in the afternoon or evening, buenas tardes, señor or señora, we can use that. Okay, kids? Now, ¿cómo se dice en español? How do you say it in Spanish? Hello, Aryan. You'll say, hola, Aryan. Let me write it down for you. Hola, Aryan. And again, exclamation like this. How will you say good morning, Miss Claudia? You'll say, buenos dias, Señora Claudia. Buenos dias, Señora. This is the short form of writing Señora Claudia. Then, good afternoon, Mr. Kwan. You'll say, buenas tardes, Señor Juan. The last one. Good night, Mrs. Singh. How will you say this? Buenos or buenas? Come on. Buenas. Buenas noches, Señora Singh. Okay? Like that we do that, kids. Perfect. Now, we've learned the salutations. We've learned the greetings. Let's move to las despedidas. How do you say goodbye? Okay? Question सिखाऊंगी. Don't worry. पहले hi और bye बोलना सीख लो. All right. Now, what are some informal ways? Informal तरीके क्या हैं bye बोलने के? Ciao. That's bye. So it's actually Italian, but yeah, you see that in Spanish conversations as well. Ciao. Adios, the most common. Adios is goodbye. Nos vemos. Nos vemos. We'll see each other soon, okay? Like we want to say, see you soon. हमें किसी को बोलना है. So, nos vemos. Y cuídate. Take care. Cuídate. Take care. Likewise, bachcho, in formal conversation, how do you say goodbyes? You say hasta luego. Hasta luego means see you later. Luego is later. Hasta mañana. See you tomorrow. Mañana, tomorrow. Hasta pronto. Hasta pronto in a formal conversation when you want to say see you soon. Jaldi milenge. Okay. So these are some different ways जहाँ पर आप goodbye बोलते. Now, how will you say goodbye in this situation? You're talking on the phone, okay? So if you're on the phone with a friend and you're about to hang up, the most common expression you'll use is adios, right? With friends. But if it is a more formal conversation, like between colleagues, you better use hasta mañana, hasta pronto, anything like that. Now, you're at the airport. You or somebody important to you is leaving for a couple of months or even years. So this is a good time to use nos vemos. We'll see each other soon. Or cuídate. Yes. Preferably use cuídate here. Take care. Okay? Now, the last situation for you. Leaving the office. So your work day is over and you're about to go home. So what's that one thing that you should say to your co-workers? Let's say you're going to meet them tomorrow as well. So, hasta mañana. See you tomorrow. Wonderful, kids. So, hi and bye to bolna seekh gaya. Let's be a little nice. Seamos amables in Espanol. Okay, how do you do that? So, when someone gives you a compliment, आप English में क्या बोलते हैं? Thank you. Now, how do you say that in Spanish? Gracias. Gracias. Okay? And when you hurt someone, गलती से, and you make a mistake, आप क्या बोलोगे? Sorry. And sorry in Spanish is
Lo siento. Lo siento. Okay? The other way is perdón. So I'm sorry, pardon me, perdón. Okay? The next kids. When you make a request, आपको किसी से request करना है that please do this for me or please help me. What will you say? Por favor. Por favor. That is please. The next. So when someone has an exam या कोई बहुत important event है उनकी life का and you want to wish them best, what will you say? Buena suerte. Buena suerte. Have good luck. Okay? Or you can also say que te vaya bien. I hope everything goes well with you. Que te vaya bien. Hope all goes well. Okay? Next kids. When you welcome someone, you say welcome your home. मतलब कोई आया आपके घर and you want to say okay, welcome, welcome. How do you say that? You say bienvenido, bienvenida, bienvenidos or bienvenidas. Any of this form means welcome. का स्वागत है. इसी तरह when you meet someone for the first time and you want to be nice to them, that it's nice to meet you or pleasure to meet you, so you say encantado or encantada. Nice to meet you. Okay? अब आपको कैसे पता कब bienvenido यूज करना है, कब bienvenida, कब encantado यूज करना है, कब encantada? उसके लिए एक छोटा सा है. The choice between bienvenido, venida, venidos or venidas depends on the person who we are meeting. If we are meeting a boy and we are welcoming him, we will say bienvenido. पर अगर लड़कियों का ग्रुप आ रहा है, we will say bienvenidas. You will slowly understand the difference, okay? But कौन सा form of welcome use करना है, it depends upon आप किसको welcome कर रहे हैं. Alright? But when you're saying encantado or encantada, it will depend upon आप कौन. अगर आप एक लड़के हो, you'll say encantado. लड़की हो, encantada. No matter सामने आपके एक person है या multiple, you will use either encantado or encantada. Okay? So हमने basic greetings or basic salutations Spanish में सीख ली. Now it's time for you to respondeme. Answer to. So what will you say to me if you meet me for the first time? Assuming you're a girl, you will say encantada if you feel nice to meet. Next, if I bring a gift for you, what will you say to me? You'll say gracias. Likewise, you want to make a request to me, you'll say por favor, please. You have to welcome me to your groups. I'm just one person, I'm a girl. You'll use bienvenida. Okay? I have a very tough exam, I'm worried. So what will you say to me? You'll say buena suerte. Good luck. And last but not the least, you collide with me. आपकी और मेरी टक्कर हो गई. So you'll say lo siento. I'm sorry. Yeah? So now we've learned to be nice as well. What's the next step? Next step is to understand the difference between tu y usted in Espanol. Okay? So in Spanish, there are two ways to address someone as you. You बोलने के Spanish में दो तरीके. There is a formal you, which is like usted, and there is an informal you like tu. हिंदी में बोले तो आप और तू. ठीक है? So usted कब यूज होता है? So usted is used when you want to address someone with respect. आपको किसी को respect देनी. usted हम तब यूज करते हैं जब हम elders से, professionals से या उन लोगों से बात कर रहे हैं who are in authority या फिर वो हमारे लिए strangers.
whereas tu will be used with children, peers and वो लोग जिनके साथ आप बहुत ज्यादा familiar. Alright? वही हिंदी वाला difference तू और आप वाला. Okay? Now why is this difference important? क्योंकि जब आप उनसे सवाल पूछोगे उनका नाम कैसे है या कहाँ रहते हैं, सवाल भी उसी तरह पूछना पड़ेगा ना. Right? So now let's move to the next and last part of our topic for the day, preguntas de presentación. So how to ask name in Spanish? तो अभी हमने सीखा अगर कोई बड़ा है तो उससे अलग तरीके से नाम पूछते हैं, कोई छोटा है तो अलग. So in Spanish the actual question is how do you call yourself? What is your name तो है ही, but उसके अलावा how do you call yourself is a more appropriate translation. तो अगर आप इनफॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी छोटे बच्चे से या आपके क्लासमेट से जो सेम उम्र का है, यू विल आस्क ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? अगर कोई बड़े से पूछ रहे हो, यू विल से ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? In either case, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है, how do you reply to this? You say me llamo. For example, you ask me, Señora, ¿cómo se llama? Ma'am, how do you call yourself? So I'll say, me llamo Radhika. Okay? So if I ask you, ¿Cómo te llamas? You'll tell me, me llamo Arjun, me llamo Pia. Anything. Okay? Next question, kids. How to ask well-being? Well-being मतलब आप कैसे हो? How are you? वो कैसे पूछना है in Spanish? Informal तरीके में you'll ask, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Whereas in formal way, we'll say, ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? How are you? Being respectful. और कई बार हमने अपने दोस्तों से कैजुअल तरीके से बोलना है कि लाइक और भाई क्या चल रहा है, और भाई व्हाट्सएप in English, right? So in Spanish also we also have this form ¿Qué tal? ¿Qué tal is a very casual जो friends के बीच में चलता है कि ¿Qué tal? What's up? How are you feeling? So to any of this question आप reply कैसे करोगे? Estoy, you'll use this verb estoy, I am, or I'm feeling. Bien if you're feeling good. Mal if you're feeling bad. Así if you're feeling so or if you're feeling fine. Estoy así. Okay? चल last question की तरफ बढ़ते हैं. How to ask residence in Spanish, like where do you live? Again, informal तरीके के लिए ¿Dónde vives? Where do you live? And formal form, kids, ¿Dónde vive usted? You see, कभी भी हम respectfully question पूछ रहे हैं तो हम usted word use कर. So, ¿Dónde vive usted? And इसका reply कैसे होगा? Vivo en, let's say yo vivo en Delhi. I live in Delhi. Wow. हमने greeting सीख ली, हमने goodbye कैसे बोलते हैं सीख लिया, we learned how to be nice, and हमने basic questions भी सीख लिए. कितना कुछ कवर कर लिया, right? तो इसको एक conversation form में बस देख लेते. So let's assume there is an informal conversation going between two friends, Paul and Becca. How will it look like? Paul will say, Hola. Becca will reply saying, Hola. ¿Cómo te llamas? So you see, informal तरीके से Paul ने Becca से उसका नाम पूछा. Becca says, Me llamo Becca. ¿Y tú? And you? Paul replies, Me llamo Paul. My name is Paul. ¿Cómo estás? How are you? Becca says, Estoy así. ¿Y tú? And you? Estoy bien, gracias. Vivo en Delhi. ¿Y tú? मैं दिल्ली में रहता हूँ. And you? So Becca says, Yo también. So yo también is a way of saying me too. अब बार बार full statements तो बोर हो जाएगा ना बंदा conversation में use करके. So you simply say yo también. Me too. Encantada. Adios. So nice to meet you. Goodbye.
And Paul also says encantado adios. You see, Paul boy था तो उसने encantado बोला. Becca was a girl, उसने encantada, right? So मैंने already white में highlight किए all the informal elements. Now just have a quick glance at the formal conversation. यहाँ मैंने नाम नहीं लिए. So A and B, I've just named them. Buenos días, señor. The other one says, Buenos días, señor. ¿Cómo se llama? How do you call yourself? Me llamo y usted. Difference देख रहे हो? Question form तो बदला, but y tú की जगह क्या use हुआ बच्चों? Y usted. Reply. And then in the next question, ¿Cómo está usted? So using usted is optional, but if you write it, it gives more clarity. ¿Cómo está usted? Estoy bien. ¿Y usted? Estoy muy bien, gracias. Vivo en Delhi. ¿Y usted? Again, I used yo también because again and again, full statements, y usted, not working. And this time, adios ki jagah, what did I use? Hasta luego. You can use adios as well, but just a way of saying. Okay? Now, eso es todo por hoy. Nos vemos pronto. So that's all for the day, kids. I'll see you very soon in my next video with a new Spanish grammar topic. Till then, adios. Goodbye.